So, good morning, everyone. Today, in our SST session, we are going to take our first chapter of history, that is when, where, and how. Now, this class you are going to study about the medieval history. In previous class, that is grade 6, you have studied about the ancient history. In this class you are going to start medieval history, and in the next class you will be going to learn about the modern history of India. Okay, so now let's move ahead. So from this slide what you have learned that the history is divided into three periods, namely the ancient history, the medieval, and the modern. Okay, keep this in mind always, that in India or the Indian history is divided into three periods: the ancient history, the medieval history, and the modern history. Medieval age or the medieval period. So the medieval period in India spans over a millennium, from 8th century AD to 18th century AD. Okay, first of all, just understand the meaning of the word millennium. So, what is millennium? Millennium means 1,000 years. Okay, a period span of 1,000 years is known as millennium. So, in India, history, medieval age starts from 8th century AD to 18th century AD. Now we have replaced the term AD with CE, that is Common Era. Okay, but in Europe, the medieval age began in the 5th century, so we will not talk about that right now. Okay, so in European history, medieval age starts from the 5th century AD. Now, 8th century AD to 18th century ADs, that means how many centuries? 10 centuries. Okay, so 10 centuries, the period of 1,000 years. Okay, it is the period of 1,000 years. So this age is known as medieval age. Now before going ahead, we will first discuss about the CE and BCE and CE. So what is BCE and what is CE? So I can show you it on the board. Okay. No, sir, I will pause. Okay, so here you can see the word BCE, E and CE. What is BCE and CE? CE means Common Era. CE means Common Era. And what is BCE? Before Common. So CE means Common Era, BCE means before Common Era. Now what is this phenomenon? This is a phenomena to write dates or write events in. Okay, so now see how it started. So our calendars starts from the internationally followed calendar is the Gregorian calendar, or which we call it English calendar in India. जो हम इंडिया में इंग्लिश कैलेंडर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर.
Now according to this calendar, the year when Jesus Christ born, okay, from there we start the which era? Common era. जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उससे हम स्टार्ट करते हैं 1, या हम करते हैं स्टार्ट 0, ओके। वहां से हम स्टार्ट करते हैं उसकी, वहां से हम स्टार्ट करते हैं कि जहां से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वहां से लेके अब तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं कॉमन एरा, ओके। या फिर इसको हम एडी भी बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखा है 8th सेंचुरी एडी। उसके पहले वाला जो टाइम है उसको हम बोलते हैं BCE, मीन्स बिफोर कॉमन एरा। तो आज हम अगर देखें इससे पहले 100 इयर्स, ओके, 800 इयर्स, जिसको हम 8th सेंचुरी, नाउ टुडे 20th सेंचुरी 2021, ओके। तो यहाँ पर 8 से लेके 18 तक का जो टाइम है इसी को हम बोलते हैं मेडिएवल एज। दिस इज मेडिएवल पीरियड, ओके। नाउ बिफोर कॉमन एरा में आप कहीं तक भी चले जाओ, ओके। सो इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम हियर 200, 800, this will be called BCE, and the point where from Jesus Christ birth to up till now it is called common era. So we will further, I'm going to elaborate this concept with you, okay, because this is, we can't move this concept. So जीसस क्राइस्ट के बर्थ से लेके अभी तक का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं सीई, ठीक है। अब तब कोई भी हम डेट लिखेंगे उसके हम साथ पीछे लगा देंगे सीई या एडी। फॉर एग्जांपल 2021 एडी या 2021 सीई, वन इज द सेम थिंग उससे। और उनके बर्थ से जो पहले का टाइम है उसको हम बोलेंगे BCE, ओके। So this is the main difference between CE and BCE. Now here you can see your book. So in introduction it is explained that from where, which year the medieval period starts and what were different rulers ruled during this, or dynasties ruled during this period. But before that, going here, we will discuss the nomenclature of our country. Nomenclature means name of our country, that how India has been called with different names in the past. So India has one of the oldest continuous cultural traditions in the world. We have read that during ancient times that India was known as Jambudweep. So in history, India was also called as the Jambudweepa. It literally means the land of rose apple trees. Puranas refer to Jambudweep. जो पुराण है, एंशियंट टेक्स्ट है हमारे, वो हमारे देश का नाम बताते हैं जम्बूद्वीप, ओके। जम्बूद्वीप का मतलब होता है लैंड ऑफ रोज एप्पल ट्रीज। अशोकन इंस्क्रिप्शंस, you must have learned about the Ashoka. So Ashokan inscriptions, दो उन्होंने अशोका ने inscriptions होता है समथिंग रिटन और एनग्रेव्ड ऑन ए सॉलिड सरफेस फॉर द पब्लिक। पब्लिक के लिए जैसे किसी स्टोन के ऊपर अगर जैसे एंग्रेव किया हुआ खोद कर लिखा हुआ, इट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। सो अशोक, जो अशोक किंग थे, उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस पब्लिक के लिए, लोगों के लिए लिखी। सो उनको हम बोलते हैं अशोकन इंस्क्रिप्शंस। तो इंडिया वाज आल्सो नोन एज भारतवर्ष, ओके। अशोकन इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से भी कहीं कहीं इंडिया को जम्बूद्वीप बोला गया है, एंड इन सम बुक्स इट इज नोन एज भारतवर्ष,
This term also appears in another context in the Rig Veda. The term Bharata refers to the main tribe which took part in the battle of the 10 kings. The area inhabited by them was called the Bharat Varsha. So, जो हमारा ऋग वेद है उसमें भी बताया गया है कि देयर वॉज ए वॉर ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं की एक लड़ाई हुई जिसमें कि एक मेन जो है ट्राइब थी भरत, भरत नाम की एक ट्राइब थी, वो विनर हुई। उसी के नाम पर जहाँ वो रहते थे उसी के नाम पर उनके रहने की जगह को भारतवर्ष बोलने लगे। मूविंग अहेड इन द अवस्था, अवस्था इज एक रिलीजियस बुक है, ओके, लेकिन ये हमारी नहीं है, आई थिंक ईरान की है। सो इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हेप्टा हिंदू। तो अवस्था में एक एंशियंट स्क्रिप्चर है, इंडिया इज नोन एज हेप्टा हिंदू विच इज इक्विवेलेंट टू ऋग वेदा सप्त सिंधु। तो ऋग्वेद में इंडिया के लिए एक और नाम है सप्ता सिंधु। सप्त का मतलब होता है 7, 7, सिंधु का मतलब होता है नदियां। सो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ओके। सो हेप्टा हिंदू, सेप्टा हिंदू, हेप्टा also means 7. Then India was also known as Aryavrat, which essentially referred to the Gangetic Plains and its peripheries, the region which witnessed the emergence of the earliest kingdoms and republics. So इसको आर्यावर्त भी बोला गया। The Persian Sasanian inscription of King Shapur I in the 3rd century CE talks about Hindustan, from which was derived the name Hindustan, although it did not refer to the subcontinent but only to the northwest part of India. So एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन के हिसाब से भी इसका नाम हिंदुस्तान हो सकता है। ठीक है, तो हिंदुस्तान का मतलब उस समय था जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, मोस्ट ऑफ विच नाउ लाइज इन अफगान, पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज द in 1017 AD, Al-Biruni traveled to Indian subcontinent and wrote a book on it called Tarikh al-Hind. Its literal translation is History of India. So Al-Biruni एक फॉरेन ट्रैवलर थे, इंडिया में आए, उन्होंने भी एक बुक रखी जिसका उन्होंने नाम रखा तारीख अल हिंद, और इस टाइटल का मीनिंग है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। So under the rule of the Arabs, Turks, Afghans and Mughals in the medieval times, the region came to be known as Hindustan. It mostly comprised the land beyond Sindhu River and North India. It was Babur, the founder of Mughal Empire, who first referred to the Indian subcontinent as Hindustan. अब मुगल एम्पर जो थे बाबर, वो पहला ऐसा इंसान था जिसने इंडिया को हिंदुस्तान के नाम से अपनी बुक के अंदर एंटर किया। सो वी विल डिस्कस एवरीथिंग साइड बाय साइड। सो हियर वी गो। So in India, the medieval age is also divided into two parts, okay, in two phases or two parts, early medieval period and the later medieval period. So from 8th century to 13th century AD or CE, it is early medieval period, while the later medieval period from 13th to 18th, okay, this is known as the later medieval period. Now early medieval period. The early medieval period, 8th to 13th century, saw power struggles among regional kingdoms of both north and south. So what happened in the early medieval period? कि यहाँ पर हमें देखने को मिली पावर स्ट्रगल, ओके। सो पावर मीन्स टू एक्वायर अदर्स टेरिटरी बाय अ किंग. So regional kingdoms were there in both South India and North India, and they used to fight with one another to gain more and more territories, more and more power.
The Rajputs in the North India and the Cholas in South India were the prominent kingdoms. So during early medieval period, that is from 8th to 13th century, in north Rajputs were the main prominent kingdoms, and in the south Cholas were the main dynasty. The distinctive cultural characteristics of the regional kingdoms spread in the new regions that came under them. So एक डिस्टिंक्टिव कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले हमें, ठीक है, न्यू रीजनल किंगडम्स जो आई उनके टाइम पीरियड में. लेटर मेडिएवल एज में क्या होता है कि मुस्लिम्स की एंट्री होती है इंडिया के अंदर. ओके, मुस्लिम किंग्स की, मुस्लिम डायनेस्टीज, मुस्लिम कॉन्करर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, स्पेशली द टर्क्स, the Afghans and the Mughals ruled India. Khaljis, the Tughlaqs and the Mughals established mighty dynasties. Islamic customs influenced political, economic, social and cultural life in India, and Indo-Islamic culture grew in a big way. So जैसे मुस्लिम्स की एंट्री यहाँ पर होती है, न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर वॉज सीन हियर, न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वॉज सीन, न्यू स्टाइल ऑफ, you can say, the food preparation. Okay, new cuisines were developed. So new economic and cultural, social and cultural life got evolved in India. Okay. So these were the two phases of the medieval age. That one was early medieval period, 8th to 13th, and then when Muslims came in, that is called later medieval age, that runs from 13th to 18th century. Here you can see some important sources related to the medieval age. These are the coins issued by the later medieval age dynasties, the Muslim rulers in India. Okay, here you can see beautiful coins. These are also the golden coins. You will learn about a very educated king, Muhammad bin Tughlaq, who issued gold coins. These are the coins of the Gupta dynasty. See these beautiful coins issued by Muhammad bin Tughlaq. Here you can see coins of Gupta dynasty. These coins are also very beautiful. Okay, from coins are very important source of history. They tell us about the date of issue, when they were issued. They also depict some scenery or some type of photos, pictures, that which king issued them. We come know about various things, that what was the lifestyle of the people, okay, what type of government was going on, what was the attitude of the king towards his subjects from these coins. A very famous buildings, monuments were also built. So coins, monuments, okay, and parts of utensils, all these things are called the archaeological sources. Keep in mind that archaeological sources, okay, दो तरह के सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री में. एक होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं, कॉइन्स हैं, जहाँ आपके जो कह सकते हैं कि कोई भी आपके जो रिमेन्स मिलते हैं आपको, जैसे लोगों के जो बिल्डिंग्स के रिमेन्स हैं, लोगों के कपड़े हैं, लोगों के जो बर्तन हैं, उनके जो रिमेन्स हैं, दे आर नोन एज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. सेकेंड टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर द लिटरेरी. जितनी भी ट्रेवलॉग्स हैं, बुक्स हैं लिखी हुई लोगों की, या कोई डायरी लिखता था अपनी, ठीक है, या कोई पोएम्स, तो जितना भी ये चीज़ें जो बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, वो भी दो तरह की होती हैं. एक रिलीजियस टेक्स्ट होगी, ठीक है, जैसे रामायण महाभारत. दूसरी तरफ कुछ और पोइट्स ने जो स्टोरीज वगैरह दूसरी लिखी हैं आम लोगों के लिए, आम लोगों के ऊपर, वो वाली. सो
जितना भी लिखी हुई बुक्स हैं दे आर नोन एज लिटरेरी सोर्स एंड अदर्स आर नोन एज द archaeological sources. So we will also do a worksheet on this. So these are the beautiful mountains of the medieval India. You can see few, you know few of them: Lotus Temple, Qutub Minar, Hawa Mahal, है ना? Then here you can also see Taj Mahal. Okay, India Gate is there, Sanchi Stupa. So there are also lot of temples of that period. Okay, here you can see. Here is Red Fort is also here. So these are the sources of medieval history.